चलो, सो नो हम लोग वी आर स्टार्टिंग विद a न्यू टॉपिक विच इज डायनेमिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन. सो इधर ट्रांसलेशन भी होगा, रोटेशन भी होगा. वन ऑफ द एग्जांपल इज रोलिंग मोशन. ओके, वन ऑफ द एग्जांपल इज रोलिंग. सो 1-2 क्वेश्चंस करेंगे इनिशियली, देन विल स्टार्ट द रोलिंग मोशन का. ओके, चलो, डायनेमिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन रोटेशन एग्जांपल के थ्रू करेंगे. और डू यू नो स्ट्रेट लाइन ट्रांसलेशन मोशन का फोर्स फार्मूला हाउ टू फाइंड फॉर एक्सेलरेशन कैसे आएगा? जनरली फोर्स अपॉन मास विल गिव द एक्सेलरेशन ट्रांसलेशन में. रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन कैसे आएगा? रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन विल बी अल्फा. अल्फा का फाइंड करने का मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन? ए एंड अल्फा A by R. ए इक्वल ए बाय आर, ए इक्वल टू आर अल्फा यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. ओके, चलो क्वेश्चन क्या करो, आप ही करो नीटली एंड सॉल्व. ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, पूरा लेंथ l है, इसका मास है m, is placed smooth horizontal surface. It is acted by a force as shown in figure. I applied a force about what? About center of mass. I applied a force L by 4 distance दूर में. I applied a force. So क्या होगा? मतलब horizontal surface में ऐसे है, I धक्का दिया ऐसा. Okay. The linear and angular acceleration of the rod. Find करो. Linear acceleration चाहिए and angular acceleration चाहिए. So whenever I told you linear acceleration के लिए Newton's second law we have to use in linear motion में. Angular acceleration means again Newton's second law in angular. Tau is equal to I alpha. Use करो. And find the linear and angular acceleration. मतलब इधर दोनों हो रहे हैं ना, आगे भी जा रहे हैं, टॉर्क की वजह से रोटेट भी हो रहे हैं. So this is an example for translation and rotational. L/2 distance, L/2 distance. हाँ, प्रणव करो, आंसर बोलो. देखो लीनियर एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या करेंगे? फॉर्म न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल m है. एक ही फॉर्मूला में. हाँ Sir, linear is F by M and angular is 3F by ML. हाँ, यस कट. ना सेकंड में ट्राई करो. एक ही फोर्स, नेट फोर्स जो एक ही फोर्स है, F इक्वल m है, A इक्वल F by m. अगर ही आस्किंग एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए अगेन सेकंड लॉ पर टाउ इक्वल आई अल्फा यूज करो. टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा एंड टॉर्क विल एक्ट राइट because about center of mass, torque about always one point Yes, will be m into L by 4. M into L by 4. Force into R into F perpendicular, right? R into F perpendicular. So F into L by 4 is equal to what is the moment of inertia about center of mass rod wala? M L square by 12. L square by 12. Alpha khatam. 4 3 12. So therefore alpha is equal to 3FL by ठीक है, एक एल कैंसिल करेंगे, 3F by ML. अल्फा आ गया. Now what is saying? The location of the point on the rod where it has zero acceleration. कौन सा पॉइंट में जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है? ओके, सी वन एक्सेलरेशन लीनियर में, आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर का. देखो एक एक्सेलरेशन सीधा वाला आएगा, इस तरफ स्ट्रेट जा रहा है, आपको इधर से मान लो x डिस्टेंस दूर में इस पॉइंट में tangential acceleration, रोटेशन की वजह से there is a tangential acceleration will be coming or not? रोटेशन की वजह से which direction that is? Tell me. ये घूम रहा है, torque is acting like this, right? In this clockwise sense. मतलब this rod acceleration will be because of rotation there is a tangential acceleration. कितना है फॉर्मूला? कितना होगा? A equal to R alpha, right? R alpha. So X alpha is a tangential acceleration. इस पॉइंट में जीरो होने के चांसेस आर देयर. भाई इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इधर एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है ये, एंड बिकॉज ऑफ रोटेशन आल्सो देयर इज ए लीनियर एक्सेलरेशन इज एक्टिंग व्हिच इज x अल्फा. सो ये दोनों मतलब इनडायरेक्टली a माइनस
alpha x is equal to 0. In this condition में is telling to find the value of x. Find करो. But why And is there substitute- another acceleration acting backwards? Why the acceleration is acting Backwards. backwards? देखो रोटेशन का वजह से अल्फा अल्फा किस तरफ आ रहा है, ऐसा ऐसा एक्ट हो रहा है ना अल्फा. उस पॉइंट में ये पॉइंट पी इफ आई ड्रॉ विच डायरेक्शन इज गोइंग लेफ्ट साइड राइट साइड. इनिशियल एक्सेलरेशन रोटेशन की वजह से ये इस तरफ जा रहा है ना एक्सेलरेशन. उस पॉइंट में एक्सेलरेशन दैट्स व्हाई इस तरफ लगाया मैं बिकॉज ऑफ अल्फा. अल्फा का डायरेक्शन के हिसाब से ये पॉइंट लीनियर एक्सेलरेशन. सी दैट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. हियर देयर इज अ लीनियर एक्सेलरेशन. एंगुलर के वजह से भी देयर इज अ लीनियर एक्सेलरेशन which is I am converting into the linear acceleration. Okay, so alpha x दोनों equate करो and find the value of x. Tell me a के Sir, value f L by by m लगाओ. 3. हाँ L by 3. very good. So Sir, f but why will there be a again in देखो the back? ये रॉड क्या करे टेल में. पूरा रॉड इज गोइंग विथ लीनियर एक्सेलरेशन एंड आल्सो रोटेटिंग. दोनों कॉम्बिनेशन चल रहा है. अभी देखो अभी तक क्या था फिक्स करता था. अभी देखो पूरा रॉड इज गोइंग आगे ऐसे जा रहा है. इफ यू आर थिंकिंग ओनली लीनियर द रॉड इज गोइंग स्ट्रेट राइट. मतलब एवरी पार्टिकल हैज द एक्सेलरेशन ऑफ ए. वो तो पक्का एवरी पार्टिकल इन द बॉडी हैज एक्सेलरेशन ए राइट. if I think of about linear because of rotation there will be every particle also will have the tangential acceleration. rotation की वजह से acceleration act होगा. every particle will have but in opposite direction में act होगा because rotation ऐसा हो रहा है ना ऐसा रोटेशन है उसके वजह से ये एक्सेलरेशन आएगा. नाउ एट व्हाट पॉइंट में जीरो कैंसिल होने के बोले तो मैं इधर से बॉटम ही होगा ना. ये वो नहीं होगा राइट because all are going these particles are going this direction. A bottom particles are coming this direction. इधर only chances are there cancel होने का. So x distance लिया. X distance में I equated this one. Net acceleration is 0. He is telling to find. In that way he is telling to find x minus So alpha we'll is get L by 3, yeah. L by 3 is answer. Yeah, got. Alpha is 3f by ml into x is equal to 0. So f cancel, cancel, x equal to L by 3. So L by 3 mein there is a net acceleration which zero acceleration will be there. So rotation ka वजह से also there is an acceleration. That acceleration we found the relationship use करके we are solving उस point में. Okay. So learn करो ये दोनों कॉम्बिनेशन हो रहे हैं. ये सीधा फिक्स नहीं है. ये आगे भी जा रहे हैं एंड रोटेशन भी हो रहा है. So each and every point में दो acceleration आएगा. हर पॉइंट में there is two accelerations. वन आगे वाला एंड रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन आने वाला. वी आर कन्वर्टिंग इन टर्म्स ऑफ लीनियर वाइज सो दैट वी कैन इक्वेट बोल के. ओके चलो नाउ सेम मॉडल करो. टेल आंसर. A step disk of mass m, inner and outer radius are given, smaller, capital, is placed on a smooth horizontal surface. It is wrapped by a thread with a horizontal force F. And radius of gyration is k. मतलब इंस्टेड ऑफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको यूज करने का एम के स्क्वायर यूज करने का. रेडियस ऑफ gyration इज एम के स्क्वायर है वो यूज करने का. हाँ नाउ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क. फाइंड करो. नाउ देखो ये डिस्क आगे भी जा रहा है गोल गोल रोटेशन भी हो रहा है राइट. इफ यू थिंक ओनली लीनियर वाइज ये रोल करके आपको सीधा जा रहे हैं ना. वो भी सीधा भी जा रहे हैं रोटेशन भी हो रहा है. सो एक्सेलरेशन फाइंड करो. सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन. हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग. ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग. नेट फोर्स इज फोर्स एफ ऑल राइट. सो एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होगा. एफ इक्वल टू एम ए एंड ए इज इक्वल टू एफ बाई एम. ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग by m. This is the acceleration. Now tell me angular acceleration of the disk find करो. Alpha find करो. Angular, whenever they ask angular acceleration, we our famous one tau is equal to I alpha. Find करो. Tau is equal to I alpha. So Now torque, torque- which one should we take? Which force tell me about center of mass में किस force के वजह से rotation होगा. Which Sir, force के वजह से. both discs are the same, like they're attached. Or is it one attached disc only, or are attached. they two? नहीं मतलब Okay, स्टेप sir. बोल के थोड़ा है अटैच है सेम अटैच है कुछ Okay, नहीं. sir. ओके नाउ टेल मी टॉर्क किस फोर्स के वजह से आएगा. एफ फुल राइट बिकॉज अबाउट सेंटर ऑफ मास में डिस्टेंस इज आर.
is a torque. It is acting in the anti-clockwise direction, right? Torque is acting in the anti-clockwise. No use karo. Torque is R into F perpendicular. So R into F perpendicular is F is equal to moment of inertia is M K square into alpha. Now लगाओ कितना आएगा आंसर? Alpha is equal to RF by M K square. But how is the torque acting anti-clockwise? Torque का form, torque you saw right on that videos. Yeah, yeah. Torque का what is the formula torque का? Tell me. RF sin theta. RF center R into F perpendicular, right? Yeah. Okay. Now about center of mass में force किस तरफ धक्का दे ऐसा धक्का दे रहा है ना? So whether it will rotate, the sphere will anti-clockwise or clockwise? Which direction it will rotate? So shouldn't it be clockwise? Clockwise. इस clockwise means आपको clock घूमने वाला clockwise बोलते हैं. Anti-clockwise क्या करेगा? देखो about center of mass tell me. This sphere में धक्का दिया तो the sphere will rotate in anti-clockwise or clockwise? Anti-clockwise. ऐसा धक्का दे रहा है ना, ऐसा धक्का दे रहा है. Tangentially you are giving, right? The wheel will rotate like this. Okay. So डायरेक्शन छोड़ो अभी, मतलब डायरेक्शन tau is equal I alpha लगाने clockwise clockwise छोड़ो अभी. tau equal I alpha R into F perpendicular equal to MK square into alpha वैल्यू आ जाएगा. So रोटेशन एंड ट्रांसलेशन होने समय आपको ऐसा मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट? एंड सेंटर ऑफ मास का जो भी वेलोसिटी है सभी पार्टिकल्स का वेलोसिटी विल बी सेम, एंड सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन विल हैव द सेम एक्सेलरेशन विल बी, ऑल पार्टिकल्स का सेम एक्सेलरेशन विल बी देयर, राइट? Now we'll see. Now one of the example we'll take the rolling motion and we'll see the questions, then you will understand still more. क्या बोल के, okay? चलो कब बेटा? हाँ, rolling motion. Rolling motion. Rolling means we can view this as a combination of pure translation motion and pure rotational motion. Rolling motion में, right? Rolling object rolling हो रहा है. That means ये आगे भी जा रहा है, घूम के जा रहा है, right? So it has angular velocity omega and center of mass का velocity v center of mass का, right? मतलब if I consider always separately consider करो. If you take only one translation, it is velocity of the center of mass will be like this. Pure translation I am talking about. This is a translation. And pure rotation का वैसे about its own axis में is rotating with omega, right? So आपको this is translation and pure rotation. इस combination को is we call as rolling. That means always translation का equation भी apply करना पड़ेगा, rotation का भी लगाना पड़ेगा. हाँ, मानो समझ आया? Yeah. Yes. Now आपको प्यूर रोलिंग कैसे आएगा, क्या है उसका कहानी देखेंगे. ओके, रोलिंग इज लास्ट टॉपिक, हो जाएगा. बड़ा चैप्टर सक्सेसफुली वी आर कंप्लीटिंग. चलो हाँ, देखो हाँ, क्वेश्चन देखो. A disc of radius 1 centimeter is rolling with linear velocity 4 centimeters per second and angular speed is given. Find the velocity of A, B, C, D. So disc is there, who is rolling on the ground. I'm giving the points A, B, C, D. Okay. So radius से 1 centimeter. It is rolling with linear speed. Linear speed भी है, मतलब rolling भी हो रहा है, घूमता भी जा रहा है. So इसका velocity is 4 centimeters per second and घूम रहे, rolling कर रहे, with angular velocity 3 radians per second. Okay. Find the velocity of the ABC. So understand करो velocity कैसे find करेगा बोल के. ए का देखो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हर पॉइंट में सेम डायरेक्शन में रहेगा. ऑल पॉइंट्स सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी विल बी सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स. ओके, सो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है इधर 4 v. हाँ, इधर भी v आएगा फर्स्ट इनिशियली, इधर भी v है एंड इधर भी v है. ईच
पार्टिकल विल गेट द सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, फर्स्ट वन, राइट, ट्रांसलेशन का जो भी है। सेकंड वन, बिकॉज ऑफ रोटेशन की वजह से, यू टेल मी, आपको ईच पार्टिकल आल्सो विल गेट रोटेशनल वेलोसिटी, So for C it will be 0, right? हाँ हाँ, विल For सी, C won't it be 0? या देखेंगे। यू टेल मी, बिकॉज ऑफ रोटेशन की वजह से there will be velocity, each particle will have the velocity, right? Convert into transitional velocity, कितना होगा? V is equal to r omega, right? Normally r omega. So is इधर एक रोटेशन की वजह से आएगा velocity, so I can call that is r omega. हाँ, इसका 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 रोटेशन की वजह से कैसा आएगा, टेल में B पॉइंट में कैसा आएगा वेलोसिटी रोटेशन की वजह से? देखो ऐसे घूम रहे ना, Go down. घूम के नीचे आ रहे ना, सो नीचे से r omega. ना इसका देखो ऐसा घूमता रहे, ऐसा रहे, घूम रहे ना, द रोटेशन की वजह से द वेलोसिटी इज r ओमेगा इज लाइक दिस। एंड डी पॉइंट का देखो, रोटेशन की वजह से जुप ऐसा ऐसा ऊपर जा रहा है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी r ओमेगा। सो वी हैव टू पुट दैट, नो, रोटेशन की वजह से आ रहे हैं उस पॉइंट पे, टेंजेंशियल देखो ऐसे जाके ए पॉइंट में देखे तो ऐसा ऐसे आ रहे हैं, इनिशियल बी पॉइंट में कैसे आ रहे हैं, ऐसे जाके ऐसा आके बी पॉइंट में नीचे आ रहे हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। सो अगला पूरा नो नेट वेलोसिटी फाइंड करो, आ जाएगा, नेट वेलोसिटी विल बी द आंसर। Okay, each point का net velocity find करो, that is the velocities of each and every particle. So for A will be r omega plus V or just r omega? r omega first one ना, a omega For r A. omega plus v दोनों करो, no, a point So में then मैं for trying B and D will be same only, right? bn, D. हाँ या net velocity find करो, sit separately find करो, r omega कितना है, r is 1 into omega is 3, so it is 3 and v is how much, 4, so a का velocity क्या होगा, r omega plus v plus v, so it is So will it be like 3 I cap plus 4? No, नहीं, 3 So I you cap get plus 7, 1 and 5. 7 1 and 5, 5, 1, 1. हाँ यस, ये वाला क्या होगा, इसमें 4 है, इसमें 3 है, द नेट रिजल्ट इज 5, राइट? सो बी पॉइंट में द नेट वेलोसिटी इज 5 सेंटीमीटर्स पर सेकंड, नेट वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कृष्णा, अंडरस्टूड है? एंड इसका इसका कितना आएगा सी में, ये वाला 4 माइनस 3 1 मीटर्स पर सेकंड, एंड डी पॉइंट में विल बी सेम, राइट, 5, तो डी पॉइंट में 5 सेंटीमीटर्स पर सेकंड। ओके, डी पॉइंट नेट वेलोसिटी आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, नाउ इफ यू सी केयरफुली, ये वाला वेदर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के, दिस पॉइंट इज सो इंपॉर्टेंट, आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेदर नेट वेलोसिटी इज 0 नॉट 0 हियर। देखो r ओमेगा इज 3, v is 4, whether net velocity 0 आ रहा है, not getting net velocity is how much here, net velocity is how much you are getting, 1 centimeter per second आ रहा है ना, that means ये फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है, ये फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये नीचे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में द स्पीयर एंड द ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देयर इज अ पॉइंट, राइट, दैट कांटेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट कांटेक्ट इज स्लिपिंग हो रहा है, स्लिपिंग हो रहा है, ये नॉट, दिस नॉट प्योर रोलिंग। अगर कांटेक्ट जब भी नेट वेलोसिटी 0 होगा, दैट इज कॉल्ड प्योर रोलिंग, मतलब इसका वेलोसिटी इधर वेलोसिटी दोनों कैंसिल हो जाएगा, दैट पॉइंट व्हेनेवर इज 0, दैट इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। ओके, इधर देखो v इज हाउ मच द गिवन 4 सेंटीमीटर्स पर सेकंड, r ओमेगा कितना है 3, नेट स्पीड विल बी हाउ मच, नेट स्पीड विल बी 1, मतलब व्हेन रोलिंग करने समय थोड़ा स्लिप करके जाएगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लिपिंग बोलते हैं उसको, ठीक है? वन मोर एग्जांपल दूंगा, देन समझ में आएगा। ओके, करो। Sir, हाँ, sir, r omega is a vector. r ओमेगा, सी v इज इक्वल r ओमेगा, राइट? आपको रोटेशन की वजह से कितना वेलोसिटी आ रहा है, वी आर कैलकुलेटेड सो दैट वी कैन इक्वेट। No, sir, like, sir, for B case, हाँ sir, how did you get 5? हाँ, वेक्टर, वी आर डूइंग वेक्टर्स ओनली। देखो दिस इज 4, दिस इज हाउ मच 3, पैरेललोग्राम लगाओ, so this will be how much, under root a square plus b square, so it is 225 is 5. Sir, then in the first case, how could you just add them? अरे You should multiply them. ये Sir, इसके because वेक्टर्स both, पढ़ने का, sir, वेक्टर्स both में of them दो are वेक्टर्स आर इन द vectors. सेम डायरेक्शन, व्हाट वी हैव टू डू, टेल मी? एंगल, you want to do parallelogram law only, मतलब अंडर रूट
a square plus b Ah. square plus 2ab cos 0. Cos 0 is Is 1, 1. a plus b whole square हो जाएगा, a plus b आएगा. So shortcut है always. दोनों vectors are in the same direction, we have to add, opposite direction subtract. If we use the formula, we'll get the same thing. समझ में आ रहा है? a square plus b square plus 2ab. Angle is how much? दो vector का angle is how much? Cos 0. Cos 0 is 1. हाँ. So root of a plus b whole square. So square square cancel, a plus b. मतलब दो vector same direction है तो we simply add. Oh, हाँ. okay. Okay, one more example लेंगे. You try to. Sir, 1 minute. हाँ. सो रोटेशन की वजह से भी आपको वेलोसिटी आ रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी आ रहा है. वो कितना टेंजेंशियल वेलोसिटी फाइंड करके ईच पॉइंट में वी हैव टू फाइंड नेट स्पीड. एंड ये वाला आपको स्लिपिंग हो रहा है, ये प्यूर रोलिंग नहीं है. प्यूर रोलिंग कब बोलते हैं? व्हेन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द ग्राउंड रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी 0. इट्स कॉल्ड प्यूर रोलिंग. ऑन द वीडियोस चलो, सपोज मान लो वन एग्जांपल आई गिव. सेम थिंग, ए बी सी डी. Okay, ये velocity of center of mass is given as 8 meters per second and घूम रहे with velocity 6 radians per second. Okay, and radius is 1 meter. R is 1 meter. Now calculate each point में net velocity find करो. So done. Can't we just directly do the same as the other हाँ one? करो करके बोलो A point में B point में से. So 14, 10, 2, 10. 14, 10, 10, 2, 2, 10. 10. हाँ, वेदर इधर आपको ये कितना आ रहा है आर ओमेगा, इधर इधर डी सी पॉइंट में कितना आ रहा है? 2. हाँ, दिस इज 8 राइट? 8 है ना? Yeah. हाँ. No, Now net that's 6. speed बैकवर्ड आ रहा है ना, नेट स्पीड इज 2 राइट? Sir, no, Okay. that's 6. So net speed will be forward. That's 6, right? 6 हाँ. Yeah. नो ये फॉरवर्ड स्लिप हो रहा है कि बैकवर्ड स्लिप हो रहा है? टेल मी. Forward. फॉरवर्ड स्लिपिंग मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आपको रिलेटिव वेलोसिटी इज देयर, जो घूमने समय आपको स्लिप करके जाएगा, स्लिप होता जा रहा है इनडायरेक्टली. द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गेटिंग स्लिपिंग. ओके, नाउ हियर वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट if point of contact with the ground we see point, okay, मतलब we'll see in that way, we'll see. Okay, yeah, समझ में आया ना? Now we'll talk about rolling with slipping. देखो this अभी तक जो भी किया है rolling with slipping है अभी तक. Okay, the point of contact of the rolling object slide with respect to surface on which it is moving, that is called rolling with slipping. अभी तक pure rolling नहीं है, pure rolling without slipping है. They will mention instead of pure rolling they'll mention rolling without slipping बोलेगा. Okay, now suppose मान लो this is a ऑब्जेक्ट है. नाउ सेम इट हैज सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी एंड घूम भी जा रहा है ओमेगा. एंड इफ आई टॉक अबाउट पॉइंट पी, इस तरफ वाला बी सी है एंड इधर भी आर ओमेगा आएगा राइट. नाउ हियर आई हैव डिफरेंट केसेस. इफ द सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मतलब इसका एवरी पॉइंट में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ जाएगा ना. इफ बी सी इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड स्लिपिंग बोलते हैं. लिखो, फॉरवर्ड स्लिपिंग. If VC is less than R omega, it is called backward slipping. And VC is equal to R omega, क्या बोलते हैं? Pure rolling. Pure rolling में net velocity at the point of contact with respect to ground is 0. That is called pure rolling. Okay. So sir, for the previous question, it was Forward slipping. forward slipping. Yes. Okay.
Done. So 1 second. So when they mention no slipping means VC is equal to VR. When they without slipping means nothing but VC and is equal to R omega. Okay. So if So VC acts in the opposite direction, tell. then the signs will VC change. क्या? So if VC acts in the opposite direction, so the signs will change, right? Yes. Okay. Okay. Yeah. चलो. Now देखो, प्यूर रोलिंग और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ये दोनों कॉम्बिनेशन में हम लोग क्वेश्चन करेंगे. कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम थिंग. हम फाइनल क्या है, रोल हो रहा है, दैट्स इट. वो ओनली बॉटम का पॉइंट ओनली विल चेंज, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. ओके. सो उसको क्या बोलते हैं, प्यूर रोलिंग बोलते हैं. इसलिए लास्ट टाइम क्वेश्चंस करने से मैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाला छोड़ दो बोल के बोला ना. रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाला इज नथिंग बट प्यूर रोलिंग. ओके. नाउ इसका क्या है, देखो, if the point of contact of the rolling object does not slide with respect to surface on which it is moving, that is called pure rolling. Okay, bottom ko point is does not slide. Okay, so the ring, the point with respect to ground के साथ I am talking about. Okay, so इसके पास VC होगा, center of mass velocity, and घूमता भी जा रहा है. So इधर क्या होगा, VC नीचे आएगा, घूमने की वजह से R ओमेगा भी आएगा. He is telling the velocity of the point with respect to ground. Velocity of the point with respect to ground, nothing but Vp minus Vg is equal to 0. Okay. And velocity of the ground is how much? Velocity of the ground to rest hai na? Velocity of the ground is 0. So Vp velocity क्या होगा? Vp का velocity 2 है ना? Vc minus R omega. And velocity of the ground is 0, equal 0. So therefore Vc is equal to R omega. देखो बॉटम का वी ऑलरेडी नो वी इक्वल आर ओमेगा बोल के, बट हियर अंडरस्टैंड वीसी इज इक्वल आर ओमेगा कब ट्रू है, ओनली फॉर प्यूर रोलिंग. प्यूर रोलिंग में ओनली उस पॉइंट में वी कैन अप्लाई वीसी इज इक्वल आर ओमेगा. हर पॉइंट Sir, but it should always be the point of contact. एट द पॉइंट ऑफ where we can कॉन्टैक्ट में. apply. यस, Okay. एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में आपको वीसी इक्वल टू आर ओमेगा ऑलवेज ट्रू है इन प्यूर रोलिंग. डायरेक्शन अदर पॉइंट में चेंज होगा, आर ओमेगा विल चेंज, बट आर ओमेगा जगह में वी कैन सब्स्टिट्यूट वीसी इन दिस केस में प्यूर रोलिंग में. ओके, नाउ एग्जांपल विल सी. Sir, once can you go back? बैक ये वाला Oh, no, sir, nothing. नेम चाहिए. No, sir, I thought I missed something. ओके चलो. हाँ तो बेटा So 1 second, 1 second, 1 second. हाँ Yeah, 1 second. So I'm drawing the figure. I wrote the. या Yeah, Okay. sir. चलो. नाउ देखो, here I'll give one question. Under pure rolling, he only mentioned under pure rolling. Find the velocities of A, B, C, D. A, B, C, D. It is going with velocity Vc and rotating with omega. Radius is R only. Now fine. I want velocity at A, B, C, D under pure rolling. In terms of Vc में आएगा. करो answer. So every point will have center of mass का velocity, same direction. So A point में देखे तो इस तरफ आएगा Vc, ठीक है, V center of mass का velocity V is given, right? So V, इधर भी V है, इधर भी V है. हाँ Sir, Go to the हाँ last. tell me. sir, Ah, it yeah. will be A will be 2V, Yes. V will be V root 2, Yes, correct. So D will also C will be be 0, Yes.
And D will be V root. Yes, correct. Good. Sir, for D, why will the V act up? रोटेशन की वजह से देखो ऑलवेज ओमेगा का डायरेक्शन किस तरफ हो रहा है, सी रोटेशन So, होने sir, समय won't the total आपको velocity be V root 2? डी रूट टू क्या क्या For D, the total velocity will be V root 2, right? हाँ वी रूट टू ओनली या तो मैं बिकॉज इसके पास वेलोसिटी तो ऐसा है v सेंटर ऑफ मास का तो ईच एंड एवरी वेलोसिटी पार्टिकल विल हैव सेम वेलोसिटी रोटेशन की वजह से घूमता जा रहा है इधर तो ऊपर जा रहा है इधर तो नीचे जा रहा है टैंजेंशियली जाएगा टैंजेंशियल वेलोसिटी ओके रोटेशन की वजह से जो भी आ रहे हैं वो टैंजेंशियल वेलोसिटी से इक्वेट करने का भी ओके नाउ विल टॉक अबाउट द नाउ रोलिंग का आ रहा है आगे ना इट कैन बी प्योर रोलिंग इट कैन बी अदर रोलिंग प्योर रोलिंग में vc इज इक्वल टू r ओमेगा they'll tell okay चलो now kinetic energy in rolling motion kinetic energy in rolling motion तो kinetic energy आपको मालूम है अभी देखो व्हाट इज द फॉर्मूला टेल मी kinetic energy का फॉर्मूला रोलिंग I मोशन में omega square. ये घूम घूम तो अभी आ रहा है आगे भी जा रहा है रोलिंग में राइट सो हाफ एम वीसी स्क्वायर मतलब आगे जा रहे हैं प्लस रोटेशन की वजह से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज द फॉर्मूला वीडियोस रोलिंग मोशन में आपको ये दोनों सी रोलिंग आगे भी जा रहे हैं रोटेशन भी हो रहा है आगे की वजह से काइनेटिक एनर्जी विल बी देयर रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी देयर ओके दिस इज नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन में बट इन स्पेशल केस में इफ आई वांट ओनली इन प्योर रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग देन क्या करेगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन में करेंगे हम लोग हाँ टेल में हाफ एम वीसी स्क्वायर सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m k square because एक शेप का एक रहेगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट्स व्हाई वी विल राइट ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन k m k square into ओमेगा वी नो इन प्योर रोलिंग में vc is equal to r omega omega is equal to vc by r राइट प्योर रोलिंग में ऑलवेज vc equal to r omega सो ओमेगा के जगह में vc by मतलब vc square by r square because square है ना नाउ टेक कॉमन हाफ m vc स्क्वायर अगर मैं कॉमन लिया तो क्या आएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर some books this is a kinetic energy in pure rolling this is a formula we have to buy at pure rolling Sir, you know, VC is okay, never mind. half mv square into 1 plus k square by r square sometimes they some books में they will write like this half m vc square center of mass square plus 1 by c बोलेगा c is nothing but some constant k square by r square c is nothing but k square by r square some books में ऐसा लिखेगा anything same बार बार लिखने से अच्छा c फाइंड करेंगे but this is the formula m vc square into 1 plus k square by r square is the formula So what is K again? radius of gyration Oh, Radius of so can't gyration we का just formula replace K square as I square by R square? k square is I by m Oh, I by M. My bad. I equal to m k square So, see because so the first equation is just for rolling. रोलिंग ओनली नॉट प्योर रोलिंग रोलिंग के लिए ओनली इन प्योर रोलिंग में आपको ये यू कैन इक्वेट दिस वन ओमेगा के जगह में vc by r बोल के लगा सकते ओके चलो नो काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन करेंगे एंड आउट ऑफ फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन टेल मी आई वांट द वैल्यू ऑफ सॉलिड स्फीयर टेल मी एनीबॉडी रेडियस ऑफ गायरेशन इन सॉलिड स्फीयर Under root 2 by 5 r root 2 by 5. हाँ करेक्ट वेरी गुड सुपर r अंडर 2 by 5 सो क्या करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो 2 by 5 mr स्क्वायर आई टोल्ड यू k का कैसे फाइंड करेगा m निकाल दो r को बाहर फेंक दो रिमेनिंग जो भी नंबर है वो अंडर रूट डाल दो सो m को निकाल दिया r को बाहर डाल दिया सो r रूट 2 by 5 राइट k के वैल्यू कैन फाइंड दैट इजीली हाँ चलो करो Sir, once can you go back? Sir, won't k square by r square be the coefficient of the mr square? lr स्क्वायर Kr square by k square by k r is called radius of gyration square. हाँ मतलब नो नो डोंट कन्वर्ट अगेन m k स्क्वायर वर्ड नहीं है
कि इधर ऑलरेडी वी कैनोट राइट BC स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, उधर आपको कॉमन ले दैट्स इट, कॉमन लगा के 1/2 K स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, K इज रेडियस ऑफ गायरेशन दैट्स इट. Okay. ओके हाँ चलो मैं करो. A disk of radius 2 meters and mass rolls in a horizontal floor. Its center of mass at the speed is given. How much work is needed to stop it? मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी is 0. वर्क इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी राइट, वर्क एनर्जी थ्योरम. मतलब फाइंड करो, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, आ जाएगा रोलिंग में. एंड दिस इज अ प्योर रोलिंग. ओके So can you go back to the slide for a second? Yeah, okay. Yeah, okay. So that is fine change in kinetic energy, right? Using work energy theorem. yes, Ki फाइंड करने का, बिकॉज वी नो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. And So final kinetic directly energy is zero. हाँ फाइंड करो, खत्म. So disk का moment of inertia, gyration you know already, K value. So 3. Yeah, 3. So for the previous question, I mean, Yeah. never mind. The formula is half mv square plus half I omega square, right? हाँ that is normal rolling में, but Okay. pure rolling ये वाला. मतलब क्वेश्चन में they will sometimes they will not mention, but आपको प्योर रोलिंग करने से आ जाएगा. मैक्सिमम क्वेश्चंस आर प्योर रोलिंग वाले. So what's moment of inertia of sphere? 2/5, right? स्फीयर डिस्क. Oh, this will be 1/2. हाँ रूट 1/2 आर राइट. Yes. So answer. So what's the inertia, moment of inertia of a disk? mr square by 2, right? MR square by 2. I told that disk का meaning क्या है वो I told right. Divide with the smallest number. So already MR square you divided with 1 right. So 2 से divide करो. MR square by 2 is disk. And convert centimeters to meter also. So answer कितना है? So 3. Yes, 3 is answer. आ गया मान्य? No. So 1 second. Yeah. Yeah, 3. Yes. चलो करो. ये करो. So option cell क्यों? A solid cylinder is of mass m is rolling on a horizontal surface. Now cylinder है, rolling हो रहे, zoom 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 बोल के. It collides with the horizontal spring of force constant. देखो they will mechanics थोड़ा add कर रहे हैं. Spring के साथ collide हुआ. The maximum compression produced in the spring will be. X is asking. Okay समझ में आ रहा है? ये सिलेंडर है, रोल करके इधर स्प्रिंग है. सो एक कंप्रेस आने के बाद कितना x कंप्रेस करेगा? So which one you will apply?
Which Sir, concept you'll let's apply? use conservation of Reduce? mechanical energy. Conservation of mechanical energy. Because there is no friction, there is no work done by external agent. Conservation of mechanical energy. Initial kinetic energy is आपको मालूम है घूमता जा रहा है ना, एंड फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. And initial potential energy spring का जीरो है. And what is the formula for potential energy of the spring? Anybody? half kx square. खत्म. Half kx square. Use करो and solve. And it is the pure rolling. Is also the given pure rolling. करके ऑप्शन बोलो. So cylinder is 3/10, right? What? Cylinder's momentum is just Cylinder 3 is nothing mR. but disk only. mr square by 2. मतलब more definition I'm telling. So 0.6 meters. So 1 second. ये करना है तो देखेंगे. So इसका But like 0.6. 6 only. Yeah. The answer. So sir, basically the half mv square plus half I omega square will be half kx देखो square. always don't use again that one. Again starting से क्यों? Directly k terms में लिख लो ना. Half m vc square into 1 plus k square by r square. वो use कर लो. Into 1 plus Oh, k square by r square is equal to half k kx x square. square. Yeah, understood. And this k don't cut. Yeah, here. 0.6 only. Yeah, 0.6 answer. Okay. चलो. Now here one thing I understand. देखो इधर नोट बोल के लिखो. In pure rolling में kinetic energy of translation kinetic energy is to rotational kinetic energy is to total kinetic energy. कौन सा इन द प्योर रोलिंग में? ये तो अपना बिट्स में पूछेगा. ओके. सो क्या है? 1 is to k square by r square is to 1 plus k square by r square. This answer. ये डायरेक्ट रेशियो रिमेंबर करो. kinetic energy translation अगर 1 मानेगा, rotation will be k square by r square, total will be 1 plus k square by r square. This is the ratio. Okay, लिखो ये point. Okay, now solid table. Ratio of rotational kinetic energy to the total kinetic energy is how much? So your video is lagging. Uh, you able to hear? Yes, sir. Yeah, so the video is stuck. Can I rejoin? Sir, I can't see. Yeah.
अभी भी स्टक का? So now I can't see only. I'll Yeah, can everybody hear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, karo. See, solid sphere is rolling. At the time, you're asking what is the ratio of the kinetic energy rotation to the kinetic energy total. Would it be k squared by r square plus k? Like K is k how much? square Okay. into 1 by r square plus 1. नहीं, K का solid sphere मालूम है ना? Solid sphere I'm asking. Oh. हाँ. Right. Sir, 2 by 7. Yes, 2/7 is answer. K का वैल्यू फाइंड करना नहीं आ रहा है? मानो भूल गया K का. My God. Solid Root sphere I is am right. Will be 2 by 5 by 7 by 5. Root I am right. Yeah, 2 by 5 is 7 by 5. 2/5 is answer. So total 2/7 is answer. Okay. So these are अभी तक जो भी किया that is called uniform rolling. We done till now uniform rolling. Okay. मतलब देखो यूनिफॉर्म रोलिंग में लिखो, यूनिफॉर्म रोलिंग में there is no acceleration यूनिफॉर्म में. Every point is moving with a constant velocity. Okay. मतलब center of mass का velocity is constant. That means indirectly acceleration क्या होगा? Acceleration of center of mass is 0. Right? Similarly, omega is constant. If omega is constant, alpha is equal to 0. So ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म रोलिंग है, यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग है. वी टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग है. एवरी पॉइंट में द एक्सेलरेशन 0 इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. बट नेक्स्ट वी आर स्टडीइंग नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग. नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग में एक्सेलरेशन विल बी कमिंग टू पिक्चर. एंड कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए इक्वल टू आर अल्फा आएगा. दैट्स इट. ए इक्वल टू आर अल्फा व्हिच वी नो ऑलरेडी. सो बी इक्वल टू आर ओमेगा, राइट? ये नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग में ए इक्वल टू आर अल्फा वी हैव टू यूज. ना उसमें क्या होगा, उसका कहानी क्या है, वी हैव टू सी. बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेदर दे टॉट So they didn't like teach specific in rolling. They just taught with sliding and without sliding. यस. ओके. सो नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग भी देखो. नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग में क्या होगा, सिंपली आपको एक्सेलरेशन विल बी कमिंग टू पिक्चर. मतलब एट द पॉइंट ऑफ रेफरेंस में, द पॉइंट, राइट? हाँ, इसका पॉइंट में एवरी पॉइंट में विल हैव एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. इस पॉइंट में ए सी ओ एम, इस पॉइंट में ए सी ओ एम, एंड इस पॉइंट में देयर इज ए सी ओ एम, राइट? एवरी पॉइंट में इफ यू टॉक अबाउट ए बी सी डी वाला P and D. Okay. So every point where acceleration will be same. But because of rotation के वजह से, because of rotation also there is acceleration. This is a non-uniform acceleration वाला. So because of rotation acceleration का direction देखो. Here R alpha. Okay. इस point में क्या होगा? R alpha is downwards. इस point में क्या होगा? R alpha like this. And इस point में R alpha like this.
because of rotation के वजह से there is acceleration, right? Acceleration का tangential acceleration will be r alpha. Now tell me, if r alpha is greater than a of center of mass, It'll be backward. it is backward slipping. Backward slipping. Or if I say a of center of mass is greater than r alpha, क्या होगा? It is forward slipping. If acceleration of center of mass is equal to r alpha, क्या होगा? उसको क्या बोलते हैं? Pure rolling. Pure rolling. Non-uniform pure rolling. Non-uniform pure rolling. मतलब pure rolling में, uniform rolling में v equal r omega and here a equal r alpha. In this point of contact में दोनों same हो जाएगा. This is called non-uniform pure rolling. Okay. So in non-uniform pure rolling में we are doing the questions कौन सा angular momentum in rolling motion also next class में करेंगे पूरा non-uniform angular momentum, because otherwise you'll get bored. अरे क्या बोल के, but हो जाएगा next class में. done, chapter done. We are doing the completing the chapter. Okay, sir.